Hello everyone, I am Dr. Hemant Rathod, PhD in Engineering from Texas A&M University. Welcome back to another video lecture based on class 11th and 12th syllabus. My goal here is to help you truly understand the scientific concepts, not memorize them or get scared by them. I hope this class helps you. Let's start learning. Okay, so today we are going to see more examples of Bayes' theorem. But instead of me telling you, I want you guys to explain it to me. That was your assignment yesterday, right? So आप लोग मुझे बताओ Bayes' theorem के बारे में. And I know people who are watching the video, they cannot listen you, but I'll try to write down what you are saying so that everybody understands what Bayes' theorem is. Okay, let's start. So, okay. Okay, who wants to go first? Okay, so tell me what is the problem? Problem which you want to solve. First, define the problem. Probability of a planet that has life and that it shows signal of what? Yeah, but what signal are you talking about in this problem? So maybe electromagnetic signal, EMF, electromagnetic waves, right? सिग्नल मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल. ठीक है, चलो. तो how can we use Bayes' theorem to find that? To find that there is life on another planet. Probability. Okay. What is our prior information? Okay, prior information है कि 20% of planets which we are studying has life. Okay, this is one information. What else? 80% of planets doesn't have life. Okay, what else? %90 of the planets that has life shows signal. Okay. 10% of planets that doesn't have life. What? Doesn't have life, what do they do?
Oh, doesn't have life also show signal? So 90% of the planet that has life shows signal, and 10% of the planet that does not have life also shows signal. Both of them are showing signal. Okay. Okay. What else? This is the information we have. Okay. So अभी आगे क्या करें? What is the first step we should do? Okay. E- event A is planet has life. या planet shows life. Okay. ये event है. Okay. और हमें यही find करना है probability of A. So probability of a planet that has life and that is shows signal of having life. Okay. So probability A is planet shows life. Okay. बाकी और sorry event A is कि particular planet shows life. That is an event. Okay. What are other events you have? What is the name of that event? Event B is planet planet doesn't show life or doesn't have life. Planet has life, planet doesn't have life. Okay. Planet event C is planet shows signal. Okay. Now let me ask you first. जो हमने बेस थ्योरम पढ़ा था उसमें वी टुक इवेंट्स E1, E2, E3. These are prior knowledge, right? And then we did a test, which is event A, right? And then we found out either event A or event E, or probability of event E when A has happened, or probability of A when event E has happened. Okay. So E were different, A is different. ये आपके जो इवेंट्स है इसमें ई टाइप के इवेंट्स कौन से हैं और ए टाइप के इवेंट्स कौन से हैं? तो क्या मैं इसको इवेंट ए लिख दूं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, बिकॉज दैट इज व्हाट वी स्टडीड, सो वी डोंट वांट टू कंफ्यूज आवरसेल्व्स, ताकि हम डिफरेंशिएट कर पाए उनको, ई इवेंट्स और ए इवेंट्स को. या सो इवेंट ए को क्या कहूंगा मैं, जो पहला वाला है प्लैनेट हैज लाइफ, व्हाट विल बी दैट? प्लैनेट हैज लाइफ, व्हाट, इसको क्या बोलूं, इस इवेंट को क्या कहूंगा? इवेंट E1. नेक्स्ट इवेंट E2. और ई टाइप के कोई इवेंट्स है? तो मतलब हमारा जो सबसेट है उसमें दो ही है, इवेंट E1 एंड इवेंट E2. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट. ओके. ओके. व्हाट एल्स? बट ये हो गया गिवन, हमें चाहिए क्या? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी वी वांट टू कैलकुलेट, व्हाट इज दैट? Probability that planet has a life
and shows signal. Okay. So probability of a planet has a life and that it shows signal of having life. ये हमें निकालना है. Okay. Let's go ahead then. क्या करें अभी आगे? हम्म. चलो पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 और E2 निकालते. ओके. क्या होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 एंड E2? So E1 planet has life. So 20% of planet we are checking has life. मतलब 20 प्लैनेट 100 प्लैनेट चेक किए तो उसमें से 20 प्लैनेट हमें लाइफ वाले मिलेंगे. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्लैनेट हैविंग लाइफ इज 20% विच इज 20/100 विच इज 0.2. ओके. प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इज अगेन 80/100 which is 0.8. What else? Then we find probability of A by E1. What is probability of A by E1? The probability that planet shows signal and has a life. Right? Okay. So A by E1 हमें कितना दिया है? 90% of the planet that has life shows signal. Okay, which is 0.9. And then probability of A by E2, probability of planet shows signal but does not have life, is 0.1. 10/100, 10%, right? Okay, what else? So probability of A is all the probabilities which show signal. मतलब सिग्नल कहीं से भी आए, राइट? उसकी प्रोबेबिलिटी. ओके. व्हाट इज दैट? Probability of A intersection E1 plus probability of A intersection E2. Okay. Then okay, so probability of intersection E1 को डिकम्पोज किया हमने probability of E1 into probability of A by E1. अगेन इसको भी डिकम्पोज किया probability of E2 into probability of A by E2. What else? Okay, so probability of A, did we know probability of A? But you said we have to find probability of E1 by A. Oh, probability of E1 by A का फॉर्मूला क्या होगा फिर जो हमें फाइंड करना है? What will that be?
sorry, say that again. Probability of E1. Probability of A intersection E1 upon probability of A. Okay. Huh. So to find this, we need to know this and this, right? Okay. So now we are finding probability of A. Okay. So probability of E1, probability, where did I write? Probability of E1 is 0.2 or 2 by 10. Probability of A by E1 is 9 by 10 or zero point 0.9, plus probability of E2 is 8 by 10 or zero point 0.8, and A by E2 is 1 by 10. Okay. So this is 18 by 100 plus 8 by 100, which is how much? 26 by 100 or 0.26. So your probability of A is 0.26. Now, what do I do next? Okay. Do we have this probability of A intersection E1? Yes. So probability of A intersection E1 is this, right? Which is this. Yes. So 0.18. Okay. Now probability that it has life when the signal is coming is probability of signal intersection life divided by probability of signal is equal to 0.18 divided by 0.26. 18 by 26. How much? 0.69 or 69% probability of finding a life which is showing signal. 69% chances है वो find करने के. So good job. Now you will never forget Bayes theorem. Hmm. So the signal doesn't mean somebody is sending signal. Signal means कि we are sending our probe to the planet and checking whether we have enough ingredient for life. If yes, that means we have a signal. If no, that means we don't have a signal. In case some alien species अगर हमारे अर्थ पे प्रोब भेजता है तो वो देखेगा ओ हाइड्रोकार्बन्स है क्या, हाइड्रोकार्बन्स, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन के बॉन्ड्स दिख रहे, उसके मॉलिक्यूल्स दिख रहे, हाँ दिख रहे. एंड देन ऑक्सीजन अबंडेंस में, हाँ अबंडेंस में, वाटर मॉलिक्यूल भी है, बढ़िया है, टेम्परेचर कितना है, तो उसको क्या मिल गया, लाइफ होने का सिग्नल मिल गया. लाइफ नहीं दिखी अभी तक, बस सिग्नल दिख गया उसको. दैट इज द सिग्नल. ओके, दे वर टॉकिंग अबाउट. ओके, गुड जॉब. ओके, नेक्स्ट, सेकेंड वन. ओके, आई एम, मैं आपको अच्छी से सुन नहीं पा रहा हूं, सो यू विल, आपको थोड़ा सा जोर से बोलना पड़ेगा. हम्म. डीएनए टेस्टिंग. ओके, चलो प्रॉब्लम डिफाइन करो.
क्या करना है और क्यों किस चीज के लिए बेस थ्योरम यूज करना है, उसके लिए पहले प्रॉब्लम डिफाइन करना है. सो डिफाइन द प्रॉब्लम. Just a second. Okay. So there has been a casualty. There has been a, क्या बोलते हैं उसको, सेफ्टी इंसिडेंट. सेफ्टी इंसिडेंट बोले या क्या कह सकते हैं. ओके. ठीक है. ठीक है. डीएनए टेस्टिंग फॉर क्या बोलते हैं उसे, ओके, डिटेक्टिव है जो डीएनए टेस्टिंग यूज करके देखना चाहता है कि मर्डर कहाँ पे हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, कहाँ हुआ, वॉट एवर. सो ओके. ठीक है. मर्डर हो गया. उसके बाद अब क्या करना है, दैट इज वन इंफॉर्मेशन. व्हाट नेक्स्ट? डिफाइन योर प्रॉब्लम. हम्म. 10 सस्पेक्ट्स एंड उसमें से कोई एक गिल्टी है. हम्म. तो पहले तो प्रॉब्लम डिफाइन करना है आपको. ढूंढना आपको दिया क्या है और निकालना क्या है, वो इन शॉर्ट बता दीजिए पहले. ओके. सो डीएनए टेस्ट मैचेस one person and we need to find probability that the matched person is guilty, right? That is the question. So this is your problem. Murder happened. If somebody was murdered, there are 10 suspects and one is guilty. A DNA test was done and that DNA test matches one person. We need to find the probability of that person who was matched is guilty. The probability of that person being guilty who was matched is the probability we need to find. This is the problem statement. Okay. आगे कैसे जाए. Hmm. So event what? Say that again. Which event? Event I. Can we again go through E and A so that we stay consistent with the textbook? Okay. Thank you. I'm waiting. Again event I. What is that event? Tell me the name first. Event E1, E2, E3, event A, what? Okay. Event E1, what is that? How many person are there? Okay. Then ये A नाम कब दे दिया आपने? Do we know the names of the people?
देन हाउ डिड यू डिसाइड पर्सन ए इज गिल्टी, जब आपने डिफाइन ही नहीं किया कि पर्सन के नाम क्या है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. There are 10 people, right? 10 suspects. Which one is A? You said person A is guilty. Event E1. कौन सा है पर्सन ए इसमें से? Person 5. Then why don't I just write person 5 is guilty? Okay. So event E1. And why did you choose only person 5 is guilty? So event तो ऐसे 10 हो गए फिर. E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, right? लेकिन आपके जो ई इवेंट्स है वो क्या है? हम्म ओके. Okay, so you have to then define कि DNA specimen matched with the suspect number 5, which you are calling it as A. You should not call it as A because we will be using A as the event. So we will keep it as only 5. Okay? Okay. So tell me, E1 is what? Probability that the suspect 5 is guilty, right? Event E1 is the event that suspect 5 is guilty. Okay. फिर event E2, suspect 5 is not guilty, right? Okay. Probability of E1 is what? 0.1. So probability of the suspect 5 is guilty is 0.1. कैसे निकाला? Hmm. Okay. So that is not right way. Probability, there is event E1. Event E1 मतलब suspect 1 is guilty. E2, 2 is guilty. E3, 3 is guilty. E4, 4 is guilty. E5, 5 is guilty. E6, 6 is guilty. E7, 7 is guilty. E8, 8 is guilty. E9, 9 is guilty. And E10, 10 is guilty. So, probability of E1 is 0.1. 1 out of 10 people. Probability of E2 is 0.1. So on up to probability of E10 is 0.1. Right? Okay. What next?
Event A. What is that event? DNA test is positive for person 5. Okay. Or DNA test is positive. What is event A? DNA test is positive or DNA test is positive for person 5? ओके, ठीक है. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज, क्योंकि डीएनए टेस्ट हमेशा 99% करेक्ट होता है और 1% फॉल्स होता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए is 0.99 and probability of A dash will be 0.1. Okay, ठीक है. What else? Correct. 0.0. Yes, not 0. Yeah. So probability that E5 is guilty when the DNA test came positive. Okay, probability of E5 by A निकालना है हमें. Okay, इसका फॉर्मूला क्या होगा? Probability of A intersection E5 by probability of A, ऐसा कुछ होगा? हाँ, तो probability of E5 by A निकालना है या probability of A by E5 निकालना है? Probability of the person being guilty is 0. हाँ, ये लिख दिया हमने. ओके. ओके, ये हो गया है ऑलरेडी. ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ E5 बाय A निकालना है. Probability that the fifth person is guilty when the DNA test has shown positive. ओके, बताओ कैसे निकाले इसको. तो गो स्टेप बाय स्टेप देन. 0.1. So this is probability that your DNA test is positive for the person 5 to be guilty is 0.99. Okay, into 0 multiplied by 0.99. Okay, then 0.01. ओके, सो मतलब जो डिनोमिनेटर में है, जो गिल्टी के लिए डिनोमिनेटर में होगा 0.99 प्लस बचे हुए जो 9 है उनके 0.01 होगा. ओके, सो मतलब यहाँ समेशन I equal to 1 to 10 probability of A intersection EI probability of A intersection EI मतलब probability of A intersection E1 पहले उसका फॉर्मूला बताइए. probability of E1 into probability of A by E1. Probability of E1 is 0.1. Probability of A by E1 is exactly, क्योंकि E1 हुआ नहीं है, फिफ्थ से मैच हुआ है, फिफ्थ पर्सन से मैच हुआ है, फर्स्ट पर्सन से मैच नहीं हुआ है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A by E1 इज नॉट गिल्टी.
which is 0.01. You are not finding DNA specimen of the first person. ओके, वैसे ही E1 से लेके E10 एक्सेप्ट E5 यही होगा 0.1 into 0.01. Now probability of A intersection E5 will be probability of E5 into probability of A by E5 will be 0.1 into 0.99. Okay, so summation of I equal to 1 to 10, probability of A intersection EI is ये कितने बार 9 बार 9 times 0.1 into 0.01 plus ये 0.1 into 0.99. How much is that? 0.009 plus 0.099. How much is that? 0.108 is your summation. So probability of E5 by A is 0.1 into 0.99 by 0.108 equal to 0.099 by 0.108 is 99 by 108. How much? %91.7. ओके, सो 5th person गिल्टी है बिकॉज उसके डीएनए मैच हो रहे सस्पेक्ट से, मतलब सीन पे जो भी डीएनए है उसका 5th person से मैच हो रहा है, तो उसका गिल्टी होने का जो चांसेस है वो 91.7% है. ओके ओके, गुड जॉब. नाउ आई वांट टू शो यू जो बेस थ्योरम आपने यूज किया वो पहली बार बेस ने कब लिखा था. सो ये जो बेस थ्योरम है ये उसका रिसर्च पेपर है. उसका नाम है एन एसे टूवर्ड्स सॉल्विंग अ प्रॉब्लम इन द डॉक्ट्रिन ऑफ चांसेस. मतलब ऐसे प्रॉब्लम जो चांसेस पे बेस्ड है उनको सॉल्व कैसे किया जाए. जैसे ये मर्डर का केस का एग्जांपल आपने दिया, ये चांसेस पे बेस्ड है ना, तो अब इसका प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करें. सो ये सारा जो भी डेटा है वो बेस ने लिखा है, बट ये पब्लिश हुआ है उसके डेथ के बाद. सो जो मिस्टर प्राइस है इसमें हेडलाइन के 3rd लाइन में मिस्टर प्राइस लिखा है that Mr. Price saw Mr. Bay's notes and saw that he has done something remarkable which the world needs to know. So बिना चीटिंग किए बिना क्रेडिट लिए he sent a letter to Royal Society because Bayes was fellow of a Royal Society. रॉयल सोसाइटी के फेलो रामानुजन भी थे, रॉयल सोसाइटी के फेलो न्यूटन भी थे. He was fellow of Royal Society and Mr. Price sent that letter, and this is what it says. December 23rd, 1763. I now send you an essay. Who is saying? Mr. Price. Which I have found among the papers of our deceased friend Mr. Bayes after his death. Okay, deceased. And which in my opinion has great merit and well deserves to be preserved. Experimental philosophy, you will find, is nearly interested in the subject of it, and on this account there seems to be particular reason for thinking that a communication of it to the Royal Society cannot be improper.
He had, the honor of being a member of this illustrious society and was much esteemed by many as a very able mathematician. In an introduction which he has written to this essay, he says that this design at first in thinking of subject of it was to find out the method by which we might judge concerning the probability that an event has to happen in given circumstances upon supposition that we know nothing concerning it, but that under the same circumstances it has happened a certain number of times and failed a certain other number of times. Okay, so what you are studying in textbook, somebody has spent a huge chunk of their life in understanding what that is, जो आपके लिए बस एक फॉर्मूला है, राइट? उस फॉर्मूला को आपके टेक्स्ट बुक में एक पूरा पेज भी मिला नहीं है. Okay, and this was published in when 1763. How many years? 262 years before, a mathematician thought about probability. When probability, जब probability को इतना भाव भी नहीं देता था कोई, जो है उस पे काम करेंगे. चांसेस के बारे में कौन सोचेगा और चांसेस के बारे में अपनी लाइफ कौन स्पेंड करेगा, कौन डिराइव करेगा. ओके, यस. सो देयर इज वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग. This Richard Price could have copied his work because Mr. Bayes was already dead. But he gave him entire credit. Not only credit, he made sure that his work, which is very important, lives even after 263 years. Okay? Okay, so this is an example of how scientific world looks like and how it has been. हम ऐसे ही जैसे हम लोग फिजिक्स पढ़ेंगे, we will see such examples more often. Okay, so आपने जो आप दो examples जो आपने सर्च किए और मुझे एक्सप्लेन किए, कोई भी रिसर्च के बारे में, कोई भी सब्जेक्ट के बारे में सर्च ऐसा ही किया जाता है. उसके प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझे जाते हैं, फिर उन्होंने उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉल्व करने के लिए क्या क्या किया वो देखा जाता है. दैट इज द फर्स्ट स्टेप of anything you do in a field of research, right? For example, let's say कोविड हो गया. अब कोविड के वायरस पे अगर किसी को काम करना है और उस फील्ड से एसोसिएटेड है बट कोविड पे कभी काम किया नहीं, सो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप कि कोविड पे पहले काम हुआ है क्या, रिसर्च पेपर्स है क्या उस पे. हाँ है. ह्यूमंस पे है क्या, नहीं एनिमल्स पे है. ओके, एनिमल के रिसर्च पेपर लाओ. वो कोविड का वायरस का कैसा इंटरेक्शन है देखो, लाइफ साइकिल कैसी है पढ़ो, ह्यूमन बॉडी में जाके वो कैसे इंटरेक्ट करता है देखो, राइट? और उसकी जो साइकिल है उसमें ऐसा कुछ हम लोग ला सकते हैं जो डिसरप्ट कर दे उसको, जो वायरस को हम लोग डिसरप्ट करें ताकि वो आगे बढ़े ना, है ना? सो आप लोग क्या करोगे, जो लोगों ने प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़े हैं, फॉर एग्जांपल कोरोना वायरस when exposed to this particular animal, this is what it does, and we want to find out what is the mechanism behind its activity. जैसे ही जाते ही इंक्यूबेट होगा, इंक्यूबेट होने के बाद मल्टीप्लाई होगा एंड वॉट एवर, राइट? एंड हाउ इट डज. सो उसका पूरा मैकेनिज्म, सो उनका प्रॉब्लम स्टेटमेंट हो गया, उनके रिसर्च पेपर का हेडिंग हो गया वो, राइट? एंड देन दे विल डिस्क्राइब कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या था उनका, उनको ढूंढना क्या था, उनका मोटिवेशन क्या था, क्या क्यों कर रहे रिसर्च. ओ हमें इसका मैकेनिज्म ढूंढना है, क्यों? ताकि उस मैकेनिज्म समझ के उस मैकेनिज्म को हम लोग टारगेट करें टू ब्रेक दैट मैकेनिज्म. वो तभी पता चलेगा, उसको ब्रेक तभी कर पाएंगे जब मैकेनिज्म के बारे में पता हो, वरना ब्रेक कैसे करेंगे. सो फर्स्ट
target is to understand the mechanism. सो उस मैकेनिज्म को अंडरस्टैंड करने के लिए अभी एक्सपेरिमेंट डिजाइन करना पड़ेगा कि हमें क्या करना पड़ेगा, कौन से माइक्रोस्कोप्स, कौन से टाइप के टेस्ट, क्या यूज करना पड़ेगा जो हमें इस मैकेनिज्म की आइडिया है हमें, राइट। सो वो एक्सपेरिमेंट है, वो डिजाइन करना पड़ेगा, राइट। सो उसके पहले उनको भी देखना पड़ेगा कि ऑलरेडी रिसर्च में अवेलेबल क्या है, लोगों ने पहले कुछ किया है क्या। ओ अच्छा, इवेंट E1, somebody studied the microorganism or somebody studied interaction of coronavirus in somewhere else, and they found their initial incubation happens this way. Oh, that is useful. Event E1, E2, E3, E4, and then you do your own event A, your own method, right? But here you don't want to prove event E1 or event A to be right or wrong. People will prove that कौन सही था कौन गलत था. Your job is to जितना हो मतलब जितना हो सके उतना नहीं, एथिकली रिसर्च करो और जो आपको रिजल्ट आता है वो पब्लिश करो. सो आपने अपना पब्लिश किया है, मुझे ये मैकेनिज्म मिला, सो आपका भी एक ई इवेंट हो गया दूसरों के लिए. अच्छा, ये इतने सारे हैं. कभी कभी लोग क्या करेंगे, कोई और एक टेस्ट करेंगे और देखेंगे कि इन पहले जो इन्होंने रिसर्च किया इनमें से सही कौन है और गलत कौन है. गलत भी तो हो सकते हैं. सो प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमें क्या सॉल्व करना है वो क्लियर होना चाहिए, एंड देन फिर हमें डिजाइन करना है कि सॉल्व करने के लिए क्या स्टेप्स उठाए जाए. ओके, दिस इज ओवरऑल हाउ हाउ वी डू रिसर्च. ओके, ठीक है. एनी क्वेश्चंस? ओके, लेट्स स्टॉप हियर देन. सी यू गाइस टुमारो. कल हम लोग पीवाईक्यू थोड़े और न्यूमेरिकल करेंगे, एक दो और पीवाईक्यूज करेंगे, ठीक है. या चलो, बाय बाय.